everyone. In this video today I am going to discuss very important MCQs of your biology chapter Cell, the fundamental unit of life. I prepared these MCQs from your NCERT book page number 57 and 58 only. In next video I will discuss the MCQs related to NCERT activity 5.2. So subscribe my channel to watch my next video. So let's begin. First question. The study of cell is known as, four options are there. First is histology, second is cytology, third is pedology, and fourth is none of these. So correct option is B, cytology. Cyto term is related with cell and logy term is related with study. So cytology is the study of cell. Now second question. The structural and functional unit of life is tissue, cell, organ system. So correct answer is B, cell. Cell is called structural unit of life because all living organism body is made up of cell. It is called functional unit of life because all the living organisms body functions are performed by cells. That's why cell is called structural and functional unit of life. Move towards the third question. Who discovered cell first time? Four options are there. Robert Brown, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek and Rudolf Virchow. So correct answer is Robert Hooke discovered cell first time. But Robert Hooke discovered dead cell first time. ओके रॉबर्ट हुक ने डेड सेल जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. लिविंग सेल किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. सो अगर डेड सेल के बारे में पूछा जाएगा देन रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर दिस द क्वेश्चन नंबर 4. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन विच ईयर? Four options are there. 1662, 1668, 1665 or 1671. So correct answer is 1665. Robert Hooke discovered dead cell in the year 1665. Fifth question. The scientist who observed the living cell first time. This term is very important. कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल पहली बार जो था वो ऑब्जर्व किया था? सो अगेन फोर ऑप्शंस आर देयर. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड हक्सली. सो लिविंग सेल सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था और डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. So after this the sixth question. The term cell is derived from Latin word cellula or cella which means small building, little rooms, big rooms, none of these. The term cell लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सेलुला, उससे और सेला उससे आया है एंड द मीनिंग ऑफ सेलुला और सेला इज लिटल रूम्स. Okay, so little rooms is the correct answer. Who wrote the book Micrographia? Okay, this question is very important. Who wrote the book Micrographia? माइक्रोग्राफिया किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी हुई बुक है? फर्स्ट इज क्लीटन, सेकेंड इज हक्सली, रॉबर्ट हुक एंड परकिंजे. सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रॉबर्ट हुक. Eighth question. In which year Anton van Leeuwenhoek observed living cell under a microscope? 1670, 1674, 1665 or 1672? As we know that Robert Hooke discovered dead cell in the year 1665, but Anton van Leeuwenhoek observed the living cell under a microscope in the year 1674. So 1674 is the correct answer. After this the question number 9. Who gave the statement ominous cellula e cellula? Ominous cellula e cellula statement was given by Robert Virchow, Huxley, Aristotle or none of these.
So this statement was given by scientist Rudolf Virchow. And what is the meaning of this statement? Ominous cellula e cellula means all new cells arise from pre-existing cells. जितने भी बॉडी में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो पुराने सेल्स से ही आते हैं और ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने दी थी. आफ्टर दिस द 10th क्वेश्चन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और राइबोसोम. सो रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus. 11th question. Which of the following is the smallest non cell? सबसे छोटा सेल कौन है? वायरस, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियोफेज. सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma is the smallest free living prokaryotes and its size is 0.2 micrometers. Mycoplasma are also called jokers of kingdom Plantae. Okay, they are also called jokers of kingdom Plantae. Okay, they are also called jokers of kingdom Plantae. So keep this also in your mind. Okay, it's also a very important question. After this, question number 12. Who said that protoplasm is the physical basis of life? Thomas Huxley, Robert Brown, Virchow or Robert Hooke? So protoplasm is the physical basis of life, ये थॉमस हक्सली ने बोला था. Next question. What is the shape of RBCs? RBCs are biconcave. RBCs are rounded. They are spindle shaped or they are spherical. First of all, the RBCs full form जो है RBCs की वो क्या है? RBCs red blood cells and red blood cells are also called erythrocytes. Okay, these RBCs do not have nucleus. Okay, ये जो cells होते हैं RBCs इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. जब ये मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस नहीं होता है. इसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है जिसकी वजह से ये बहुत सारी हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकते हैं. सो मेन फंक्शंस ऑफ आरबीसीज इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ओके, और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. दे हैव बाइकनकेव शेप. बाइकनकेव इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देयर शेप इज बाइकनकेव which maximize the surface area of the cell membrane for oxygen to diffuse across. Next question. The longest cell in human body is muscle cell, nerve cell, ovum or both B and C. So longest cell in human body is nerve cell. It is approximately 1 meter in length. तो नर्व सेल सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन विच ईयर? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस कब डिस्कवर किया था? इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831. सो 1831 इज द करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर दिस द 16th क्वेश्चन. With the discovery of the electron microscope in blank year, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कौन से ईयर में हुई थी? इन ईयर 1940, इन ईयर 1800, इन 1840 और इन 1910. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो हुई थी ये ईयर 1940 में हुई थी. सो 1940 इज द करेक्ट ऑप्शन. द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय ब्लैंक इन 1855. एज वी नो दैट सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, क्लीडन एंड स्वैन. ये दो साइंटिस्ट थे, क्लीडन एंड स्वैन, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी. और इसको फर्दर एक्सपेंड किसने किया था? 1855.
दिस डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1855 में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया था, एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज परकिंजे, एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो और हेकल. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रुडोल्फ विर्चो. Okay, so for this question, Rudolf Virchow is the correct answer. After this, 18th question, which is odd one? 4 options are there. You have to choose odd one option here. First option is bacteria, second is Chlamydomonas, third is Paramecium, and fourth one is fungi. So out of these 4 options, which option is odd one out? Option D is odd. And why option D is odd? Bacteria, Chlamydomonas and Paramecium, all these are unicellular organism. These 3 are unicellular, just only single cell is present here, but fungi is a multicellular organism. In the body of fungi, more than one cell is present. That's why fungus is a odd one. 19th question. Name the largest cell of living world. Ostrich egg, neuron, ovum, none of these. So largest cell of living world is ostrich egg. Okay, ostrich egg is the correct option. Now, okay, this is the last question. After this question, write in comment section out of 20 how many marks you got. So last question is, certain cells which can change their shape is or are. First option is amoeba, second option is white blood cells, third option is both A and B, and fourth option is none of these. So there are 2 options which are correct. A option is amoeba and second is white blood cells. Both these cells are able to change their shape. So this is the last question. Thank you very much, and watch my next video for activity 5.2 NCERT page number 58.